Hi, everybody, welcome back to another lesson of Introduction to JavaScript. And within this lesson, we'll review some practice questions, some interview questions जो कि काफ़ी frequently पूछे जाते हैं और basically हम इस लेसन में सीखेंगे ये कि how to approach JavaScript problems और किस किस तरह की JavaScript problems हो सकती हैं और उसकी क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मोस्टली जो जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम्स आप देखेंगे ओवर द इंटरनेट या एफ में वो तमाम प्रॉब्लम्स जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होंगी. और बाय कॉन्टेक्स्ट आई मीन कि हाउ जावास्क्रिप्ट बिहेव्स इन पर्टिकुलर सिनेरियोज. उसमें कुछ बिहेवियर्स जावास्क्रिप्ट के जस्टिफाइड हैं, कुछ बिहेवियर्स जस्टिफाइड नहीं हैं. वो ऐसी चीज़ें हैं जो लैंग्वेज डिपेंडेंट है. तो बिफोर फर्दर डू लेट्स जंप टू आवर वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम. So the first problem is this. Now before you get overwhelmed, okay, there's a lot going on. There's a lot of round brackets, function keyword, type of keyword, and before it confuses you, take a deep breath and break it down to a certain steps. Now the very first thing that you observe, वो क्या है? सबसे पहली चीज़ जो आपको दिख रही होगी वो है कि it has a function. Now the very next thing that you see is that this particular function is wrapped into round brackets, right? Now this depicts कुछ एक hint मिलती होगी आपको of something that you might have read about or learned about in second, third, fourth or fifth grade probably, which is PEMDAS. Now, PEMDAS stands for parentheses, exponentiation, multiplication, division, addition, subtraction. और ये फ्लो बेसिकली डिपिक्ट करता है कि ऑपरेशंस का क्या फ्लो होगा. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ऐसे ही है कि अगर पैरेंथेसिस मल्टीप्लिकेशन से पहले आ रहे हैं तो वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पहले इवैल्यूएट हो जाएगा. तो लेट्स रिलेट इट टू PEMDAS. तो एक फंक्शन है विच इज़ रैप्ड अराउंड राउंड ब्रैकेट्स. That function will be evaluated first by the JavaScript interpreter or engine. Now, the next set of things that you might see is another set of round brackets, जो कि एक function calling bracket से थोड़ी सी मिलती जुलती हैं. तो let's add things up. You see a function, you see it wrapped in the round brackets, जो कि इसको prioritize कर देते हैं in terms of being tokenized, या जो भी इस पर प्रोसेसिंग करनी है जावास्क्रिप्ट के इंटरप्रेटर ने. एंड दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज देन कॉल्ड, right? So we can say it invoked immediately. Now this particular expression in JavaScript is also known as IIFE, which stands for Immediately Invoked Function Expression. Now, what do? They act as a namespace. आप जब भी कोई जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यूज़ करेंगे आपको उसके अंदर इफ़ीज़ का यूज़ काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा. नाउ व्हाट इफ़ दैट पर्टिकुलर लाइब्रेरी यूजेस एक्सप्रेशन ए और आपकी अपनी स्क्रिप्ट के भी अंदर वो एक्सप्रेशन ए यूज़ हो रहा है एज अ डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स. तो दैट कैन कॉज यू some problem because we saw how some expressions which are not declared properly attaches themselves to the global scope and they can be a bit of a problem. So IIFEs basically preserve naming convention within your script. So the next set of things you see is var x is equal to y is equal to 5, which acts as a simple expression. लेकिन the way JavaScript sees it या way programming languages see them can be different. So you should know that all the expressions that you write, all the code that you write are evaluated from left to right, right? वो tokenize होते हैं और tokenize होके वो stack में एक particular stack में उनको allot कर दिया जाता है जहाँ पे जो interpreter होता है या आपका compiler होता है वो language processing उसके ऊपर करके it comes up with some expression building stuff. So when you see things, especially expressions like these, they can be a bit different in terms of JavaScript.
उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जावास्क्रिप्ट हैज़ अ लॉट गोइंग ऑन. इट हैज़ स्कोपिंग इश्यूज जो कि हमने डिस्कस किए. इट हैज़ होस्टिंग इश्यूज. तो इन सब का एक एक हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, इन सब को देखते हुए ये प्रॉब्लम एक्ट कर सकती है, या इट कैन पोज अ थ्रेट टू योर पर्टिकुलर स्टेटमेंट, which is something defined in this problem beautifully. So let's break this expression down, tokenize it, and build a stack out of it. So when we do that, this is the kind of stack that you will have. अब इस टैग को evaluate हम किस तरह से करेंगे? We'll have to make a few pops. So let's pop the very first element. Let's pop 5. Let's pop is equal to, and then let's pop y. अब इस stage पे आके this has formed an expression y is equal to 5, right? लेकिन हो सकता है इस y के बाद कोई var कीवर्ड हो जो कि आपकी लैंग्वेज प्रोसेसिंग में काम आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली विद अ var कीवर्ड एन एक्सप्रेशन बिकम्स अ डिक्लेयर्ड एक्सप्रेशन, और वो डिक्लेयर्ड एक्सप्रेशन एक लोकल स्कोप को भी आंसर कर सकता है. तो वी हैव टू चेक दैट. सो एट द टॉप ऑफ द स्टैक वी सी इज इक्वल टू, विच इज़ नॉट अ var कीवर्ड. सो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे फाइनलाइज हो जाता है. अब व्हेन आई से फाइनलाइज, तो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वाई हेयर बिकम्स अ ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि ये प्रॉपरली डिक्लेयर्ड नहीं है, और ग्लोबल वेरिएबल अपने आप को विंडो ऑब्जेक्ट के साथ अटैच कर लेते हैं. नाउ होल्ड दिस थॉट बिकॉज दिस विल कम इन हैंडी, एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. Let's do a few more pops. Let's pop is equal to, let's pop x. यहाँ पर भी एक्सप्रेशन बन गया. अब रुकें यहाँ पे और ये देखें कि स्टैक के टॉप पे क्या है. स्टैक के टॉप पे var है. Now var is a keyword and it helps in declaring a particular expression. तो we'll pop it as well. अब ये पूरा एक एक्सप्रेशन बन गया. एक पार्ट इस एक्सप्रेशन का y इज इक्वल टू 5 है, और एक पार्ट इस एक्सप्रेशन का var x इज इक्वल टू y इज एक्सप्रेशन है. और नाउ लेट्स ऐड द फैक्ट्स टुगेदर जो कि हमने इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करने में इकट्ठे किए हैं. तो व्हाट डू वी नो? वी नो दैट दिस पर्टिकुलर फंक्शन, दिस एक्सप्रेशन इज एन इफी, और ये फॉरन इवेलुएट होगा. ये उसी तरह से कि आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और नीचे उसको फॉरन कॉल कर देते हैं. अब रिकॉल द लोकल स्कोप. तो इस फंक्शन, ये है तो एक फंक्शन ही, ये इवेलुएट होगा, स्टैक में मेमोरी स्पेस भी लेगा, और वो मेमोरी स्पेस रिवर्ट भी हो जाएगी जब ये फंक्शन की कॉलिंग हो जाएगी. तो इसके अंदर जितने भी लोकल वेरिएबल्स होंगे वो भी सारे अपनी मेमोरी रिवर्ट कर देंगे. तो वाई हमने देखा कि चूँकि वो प्रॉपरली डिक्लेयर्ड नहीं है, और जब वो इवेलुएट हो रहा था बाय द लैंग्वेज, तो इट एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी अ ग्लोबल वेरिएबल. तो ये इस नेम स्पेस की हद से, या इस इफ़ी की हद से बाहर भी एक्सेसिबल है. अब बात करते हैं var x की, which is a local variable. It diminishes, या it reverts back its memory block as this evaluation, as this function is evaluation. Sorry for that. Okay, a little hint for you here is that जितने भी type of undefined है वो undefined ही होते हैं, as a string undefined, right? ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ undefined ही हो, कोई variable भी हो सकता है. अगर उसके अंदर भी कोई value नहीं है तो वो भी undefined हो सकता है. So now we have all the facts in place. Let's see what the console statements say. उससे पहले हम खुद देख लेते हैं कि what is the type of x and what is the type of y. So the type of x is undefined क्योंकि ये एक local variable है, और इस iffy जब ये evaluate हो जाएगा, thank God I got it right this time, तो जब ये evaluate हो जाएगा इसके बाद x तो रहेगा नहीं. और y की बात की जाए तो y is a number, since y exists in the global scope and it has the value of 5, and 5 is an integer is a number, so the type of y will be a number. So the answer to your two console statements is false and
true. So this is how you basically, break a problem. एंड देन सी कि कहाँ पे स्कोपिंग इश्यूज आ सकते हैं, कहाँ पे होस्टिंग इश्यूज आ सकते हैं. एंड सरप्राइजिंगली मोस्ट ऑफ दी जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑलवेज हैव या इधर स्कोपिंग इश्यूज या होस्टिंग इश्यूज. बाकी जो चीज़ें हैं वो तो सिंपलिस्टिक ही होती हैं. फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ आपको टाइप बता देता है. तो कुछ ही इसमें ट्रिकी चीज़ें होती हैं जिनको आपको पिक करना पड़ता है. सो नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. Now, this is a kind of a question you'll be like, why would you even, add it in the list? I mean, this is so simple. Console.log 0.1 plus 0.2, obviously 0.3. And then 0.1 plus 0.2 is equal to 0.3. Obviously, it's going to be true. I'm really sorry to disappoint you, but that's not right. Now, a very logical and realistic answer to this question is कि ऐसा हो सकता है कि the answer is 0.3 और ऐसा नहीं भी हो सकता. ऐसा हो सकता है कि it's true और ऐसा भी हो सकता है कि it's false, the second statement. Now you'll be like, what? Hold that thought. So the problem is जितने भी JavaScript में numbers हैं वो floating point precision पे evaluate होते हैं, which means कि it depends on your machine, it depends on your environment कि इनकी क्या value कब हो सकती है. So it can be 0.3 and it cannot be 0.3 as well. It can be, the whole, floating point precision in terms of an answer. और लेकिन ऐसा तमाम floating points के साथ ऐसा नहीं है. If you evaluate a few other expressions, they would evaluate just fine. So that is one of the trick questions as well. Okay, next set of questions, type of questions. Kuch isme se they're particularly easy. Type of 5, pretty simple and straightforward. It's a number. Type of undefined, since I gave it away in the first question, वरना यहाँ पर भी आप थोड़े से shock होते हैं कि what? Should have been a enum or should have been an object or something like that. Type of array subscript. I'm getting a lot of tongue twisters today. So type of array subscripts, क्या होगा इसका आंसर? Type of null, इसका भी क्या आंसर होगा? So type of arrays का आप कहेंगे कि should be arrays, right? Pretty simple and straightforward. Type of null should be undefined, since maybe not. So let me surprise you. Type of array subscript is object. Yeah. Type of null is an object. Yeah. So okay, this is the answer to this question for the last two is, well, JavaScript wanted it to be that way, or probably Brendan Eich wanted to be that way, or probably people who were building up the language constructs for JavaScript wanted it to be that way. So yeah, that's one funny question. Now this is my favorite question. Why? I was asked this question. I answered it wrong in one of my interviews, and when the interviewer told me the answer, I was a bit shocked, and I thought about it back to my way back to home. तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको जवाब दिखा देता हूँ. So the answer is banana. अब ये बनाना बनता कैसे है? That is very interesting. So at the first sight you'll be like, it's just a couple of strings being added together, concatenated together. But हो सकता है कि जल्दी में आप वो एक particular plus का sign, एक extra plus का sign miss कर दें. तो recall some of our previous lessons जिसमें हमने ये देखा था कि if we have an integer string या एक string which has an integer value और उसके साथ अगर हम unary addition operator लगा दें तो वो typecasting के तौर पे काम करता है. It acts as a typecasting operator. But what if that particular string does not have an integer value? It has a string value. It has a random, value. तो उस केस में एक JavaScript का कीवर्ड है which is called nan, जिसका मतलब है not a number. उस केस में हमें ये कीवर्ड हमें मिलेगा हमारे जवाब में, जो कि
a string cannot be converted into a particular, integer. It cannot be typecasted. So hence we get this nan. और अगर आप ऊपर देखें तो we have this plus a, a as a string, which is not a number, and hence that expression evaluates as nan. बाकी एक्सप्रेशन सही evaluate हो जाते हैं, concat हो जाते हैं, और concat होके बनते हैं बनाना. लो, यहाँ तक तो बात ठीक हो गई. So let's take this nan a bit more further. So we know that nan is a JavaScript keyword, right? But what is the type of nan? I mean, should be some enum, should be an object, right? And the answer is, drum rolls, it's a number, right? So for everybody out there, never build a language in 12 days. This is what happens when you do. So the answer of this question is also that JavaScript wanted it to be that way. So let's take it a bit more further. अभी तो interesting चीजें आना शुरू हुई हैं. So what if nan is equal to nan? Take a second, I'll wait. True, right? It should be true. It's pretty straightforward. Now, the answer is false. Why is it false? I mean, why? Why should it be false? Now, इसका काफ़ी एक interesting जवाब है. लेकिन since अभी दो questions ऐसे गुजरे हैं हमारे जिसमें the answer had been that JavaScript wanted it to be that way, but I want you to, see the verdict yourself, that why JavaScript wanted it to be that way. So back to the history lessons. आपको याद होगा जो history lessons हमारे earliest history lesson जो था इस course में, उसमें मैंने ये कहा था कि knowing history is very important, because everything gets sucked back to that one history of JavaScript. So within that history lesson, I told you that the very first draft of JavaScript was ECMA 262. So ECMA 262 basically was the first draft जिसमें जितने भी JavaScript के language constructs थे या context थे वो सारे decide हुए थे और as a document present किए गए थे, और उसी के ऊपर जितनी भी उसकी iterations थी, जितने भी उसके versions आए हैं वो at the top of ECMA 262 के ऊपर आए हैं. तो इसका जवाब देने के लिए we'll have to go to that particular document. So ECMA 262 को आप refer कर सकते हैं इस URL के through, and you can do a lot of digging out yourself. You can find a lot of interesting stuff के कुछ algorithms जो कि under the hood काम करते हैं for JavaScript. So इस expression का answer देने के लिए I'll take you to this particular URL. So we land to the ECMA International website, and we land to the section of the abstract equality comparison algorithm. So let's read the headline of it. The comparison x is equal to y, where x and y are values, produces true or false, obviously. Such a comparison is performed as follows. Acha. Now we need to find the value चूँकि type of x is number and nan is a number, so our answer lies here. If x is nan, then return false. If y is nan, return false. So it's straightforward. This is how JavaScript works. This is the equality algorithm for JavaScript. And since it says that either the value on the RHS or LHS is nan, then we have to return false. So I hope you learned something new. I hope this particular video and this lesson gave you the exposure in terms of practice questions and interview questions जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं. Under the hood कुछ details आपको clear हुई होंगी, and I hope you learned about how you can
break down some of the JavaScript problems. So thank you for watching this video. I'll see you in the next one.